Hello, good morning, and welcome to our cyber awareness webinar that's actually targeting teenagers. I'm Ayush Pandey, and I'm thrilled to be your host for this essential session on staying safe in the digital world. With the increasing interconnectedness of our lives, understanding the importance of cybersecurity has never been more crucial. And we are gonna cover the four topics here on cyber awareness on the teenagers part. That's first one is secure password, second one is malicious links, third one is cyberbullying, and fourth one is voice and video faking. So I'm 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 interning at Ascella InfoSec currently, and I'm gonna be your host tonight this morning. And there is my partner Diksha, which is gonna present the first topic, secure password. So Diksha, over to you. Thank you, Ayush, for sharing this with me. And good morning, everyone. My name is Diksha, and I am a offensive security intern in Ascella, InfoSec. So, thank you, Abhishek sir. आपने मुझे ये चांस दिया. So, let's come to the topic. Today's topic are now the first topic is secure password. Secure password. Learn how to protect. In this session, we secure password. We know about the how to protect your online identity by creating secure passwords, avoiding common mistakes, and using tools to manage them safely. See, पासवर्ड की वैल्यू समझने के लिए थोड़ा सा एक जनरल से एग्जांपल हम ले लेते हैं. आप सबको पता है कि हम लोग पहले हमारे फादर्स ग्रैंड फादर्स जो हमारा घर का जो इम्पोर्टेंट सामान होता था लाइक आवर मनी, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसको सेव करने के लिए हम लोग ना एक लॉकर यूज़ करते थे, सबको पता ही होगा, या वॉल्ट यूज़ करते थे, तिजोरी. तो उसको यूज़ करने के लिए वो हम एक उस पे क्या होता था, एक सिंपल सी की होती थी, एक हैंडल होता था, हम उसको मूव करते हैं और वो इजीली ओपन हो जाता है. तो अब बहुत कम यूज़ करते हैं. अब आज मार्केट में एक नए डिजिटल लॉकर्स आने लगे हैं. डिजिटल बहुत सारे बायोमेट्रिक जिसे लॉकर्स की से जो ये ओपन होते हैं, तो ऐसे लॉकर्स जो आने लगे, तो क्यों हमें इसकी नीड पड़ी. वो हमें लॉकर तो लॉकर ही है ना, वो भी तो उनसे हमारा काम चल ही रहा था, राइट. तो but yes, this is not the time for old old things to use. आप आपको चीज़ें पुरानी थी वो बहुत इजीली थेफ्ट हो सकती हैं. उससे बचने के लिए ही तो हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी. तो इसीलिए डिजिटल लॉकर्स की हमें नीड पड़ी. तो क्या सिर्फ आपका एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, डॉक्यूमेंट्स और पैसे और ये समथिंग, क्या सिर्फ यही इतने इम्पोर्टेंट है कि इनको लॉकर्स में रखने की ज़रूरत पड़े? आई डोंट थिंक सो. हमारे सिस्टम्स, हमारे डिवाइसेस में रखा हुआ एवरी डेटा शुड बी सिक्योर, राइट. तो आप लोगों को उसको सिक्योर रखने के लिए अब अपना डिवाइसेस तो हम लॉकर्स में नहीं रख सकते, राइट. हमको उससे सिक्योर रखने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है. सो द पासवर्ड इज़ अ बैरियर जो एक अटैकर या हैकर से आपके डेटा को बस सेव रखता है, राइट. तो जब वो इतना बड़ा एक रोल है पासवर्ड, तो उस वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस आपको आई थिंक अब पता चली होगी. तो आपको वो कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, ये हम आपको इस सेमिनार में और इस टॉपिक में आपको क्लियर करेंगे. सो या अवर नेक्स्ट स्लाइड इज the password with password and quit. See, passwords are typically stored in the system using various cryptographic techniques to ensure security. The exact method can vary based on the system's architecture, but the general idea is to protect the password from being easily exposed, even if someone gains unauthorized access to the system. ठीक है. तो चलो पासवर्ड की इम्पोर्टेंस तो हमें पता लग गई. बट कई लोग मैंने देखा ना, मैं भी शायद, तो कई लोग पहले मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास हमारे सिस्टम में हमारे फोन्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई हैक कर ले या कितना कोई अटैकर उसको उसका डेटा यूज कर ले. वो क्या ही कर लेगा, इतनी कोई इंपॉर्टेंट हमारे पास है नहीं. बट ये बहुत गलत एक थिंकिंग है. देखो, अगर आप
हैकर को या अटैकर को सिर्फ आपके डेटा से मतलब नहीं है, वो आपके डेटा, आपके डिवाइस को ऑफेंडर बना के किसी को विक्टिम भी बना सकता है, और लीगल प्रोसेस में आप उस प्रोसेस में आएंगे, और आपका डिवाइसेस जब उस पर यूज हुआ है तो आप पे भी लीगल एक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने सिस्टम को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने डेटा को ही नहीं, अपने सिस्टम को भी रखना बहुत ज़रूरी है सिक्योर। सो कम टू द पासवर्ड, इट कैसा ये आप पासवर्ड आपको होना चाहिए, इजी, इट्स इजी टू गेस, बहुत इजीली आपका गैसेबल नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली आपका ये प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका पासवर्ड क्या होता है, 1111 000, सेम नंबर वो रिपीट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, बहुत सारे ऐप, बहुत सारे आप ये बहुत सारे ऐप और बहुत सारे वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं ना, तो वो जब लॉगिन पासवर्ड मांग, तो आप फर्स्ट टाइम जो उसको अपना साइन अप करते हैं, तो उसमें जब वो पासवर्ड, तो उसमें एक बार लिखा रहता है कि आप एक लोअर केस यूज करेंगे, अपर केस यूज करेंगे, नंबर यूज करेंगे, सिंबल्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे, राइट। तो उसको यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पासवर्ड और आपका डेटा सेफ रहे। क्योंकि जो पासवर्ड होता है ना, तो आप 1 2 3 राइट, एक एग्जांपल है कि आप 1 2 3 पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को 1 2 3 नहीं पता है, ओके। तो आपका पासवर्ड एक हैशेस में होता है, राइट। तो उस हैशेस को ब्रेक करना, क्रैक करना बहुत इजी होता है एक हैकर के लिए, और अब तो बहुत सारी डिवाइसेस भी आ चुकी हैं जो इजीली आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकती हैं, उस हैश को क्रैक कर सकते हैं। तो आपका सब थर्ड चीज होता है, होना चाहिए कि यूज एवरीवेयर वन पास। आपका एक पासवर्ड कभी भी बहुत सारे अकाउंट्स में, बहुत सारे ये लॉगिन पासवर्ड में जो होता है वो सेम नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आपका अपना पिन कोड का पासवर्ड ही अपने ना, ये जो अपना एटीएम का पिन कोड है उसको अकाउंट्स में, और अपने बहुत सारे अकाउंट्स में, बहुत सारे बैंकिंग इनफैक्ट उस पर भी आप सेम पासवर्ड रख देते हैं, बट नो, इट इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। सो या, सो अगर पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, हाउ द पासवर्ड, या, so like fortress, be unpredictable, try fastphrase, use the whole keyboard. So create a complex password that would be nearly impossible to someone to get. किसी के लिए हमारा पासवर्ड गेसेबल करना बहुत टफ होना चाहिए, कम से कम ऐसा तो आपका पासवर्ड होना ही चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक अटैकर, एक हैकर जो है वो, हैकर तो चलो ठीक है, आप लोगों को मे बी इतना जान पहचान हो, पर कोई भी अटैकर तो कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट आप ही के फैमिली रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, उसको आपका, कई लोग अपना डेट ऑफ बर्थ अपना पासवर्ड रख देते हैं, कोई कई लोग अपना ये बहुत डेट ऑफ बर्थ, अपने पेट्स का नेम, अपना नेम, अपने फैमिली मेंबर्स का किसी का भी नेम वो अपना पासवर्ड रख देते हैं। तो आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली में तो बहुत सबको पता ही रहता है ये चीज़ें, तो उसको गैस करना बहुत ईजी होता है। तो थोड़ा सा अपना पासवर्ड गेसेबल ना बनाए, थोड़ा सा उसको अनप्रिडिक्टेबल भी रखें। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्बिनेशन रखें, अपर केस का, लोअर केस, नंबर्स, सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव, एक आप पासवर्ड ले लें एप्पल, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड है एप्पल, तो जो ए है आप उसको उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या उसको एक उसमें रिमूव करके आप उसको @A की जगह आप यूज कर सकते हैं, तो वो थोड़ा हो जाता है किसी को भी उसको ट्राई करना, ठीक है। तो ट्राई फास्ट फ्रेज, आपके कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ आपके सॉन्ग लिरिक्स होते हैं जो आपको बहुत पसंद है, उसको एज अ पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं, बट वो आपका किसी को ऐसा पता नहीं होना चाहिए कि ये आपका फेवरेट है। क्योंकि जब हम किसी का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जब गैस करते हैं ना, तो यही चीज सोचते हैं कि इसकी फेवरेट चीजें क्या है, उसी को हम उसका पासवर्ड में सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो यूज द होल कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड में इतने सारे कीज होती हैं, कुछ कीज ऐसी होती है जो बहुत कम यूज होती है, तो उन कीज को यूज करें और अपना पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की ट्राई करें। So yes. So next, remembering the password. Remembering complex password. अब पासवर्ड तो हमने रख दिए और बहुत टफ भी रख दिए, बट कई बार क्या होता है कि अब अपने अकाउंट को ओपन करने की टाइम आई तो हम ही को अपना पासवर्ड नहीं पता, फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का भी कोई फायदा नहीं है। तो सो मेक इट मीनिंगफुल,
यूज अ क्लू, राइट इट डाउन, यूज अ पासवर्ड मैनेजर। ठीक है, तो कुछ जब आप पासवर्ड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखो, बट उसको इतना कॉम्प्लेक्स भी मत रखो कि वो आप ही को याद ना है, थोड़ा सा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग आप उसका रख सकते हैं, राइट। यूज अ फ्रेज, आप कुछ एक फ्रेज यूज कर सकते हैं जो इजीली आपको याद आ जाए। और बहुत सारे कुछ पासवर्ड, जैसे आपका, ठीक, आप अपना बर्थडे भी रख सकते हैं, पर उससे मिलता जुलता कुछ रख सकते हैं कि अपने बर्थडे की डेट, आप बहुत सारे लोग रखते हैं, बट कुछ थोड़ा सा उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रखें कि वो इजीली गेसेबल ना हो बिल्कुल भी। तो अपने पासवर्ड को मेंटेन रखें, और फिर थोड़ा सा क्लू रखें कि, या अगर मैंने पासवर्ड रखा होगा तो थोड़ा सा मेरा ये है, तो उस क्लू से आप उसको रिमेम्बरेबल रख सकते हैं कहीं, या आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं किसी। बट राइट डाउन जब आप करें तो बहुत ध्यान रखें कि आप अपना कुछ वो डिवाइस के पास पे वो ना रखें। कई लोग, आपने देखा होगा आपने कि एटीएम चोरी हो जाते हैं, तो और पैसे भी चोरी हो जाते हैं। तो एटीएम ठीक है, चलो बाय मिस्टेक चला गया, तो उसका पासवर्ड तो इजीली इतना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को पासवर्ड भी पता चल गया। तो उसने वो क्या करते हैं, कई लोग अपना पासवर्ड याद रखने के लिए वो पास अपने एटीएम पे ही अपना पासवर्ड राइट डाउन कर देते हैं। वो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो अपने डिवाइस और अपने किसी भी डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर के पास कम से कम उसको राइट डाउन करके ना रखें। यूज अ पासवर्ड मैनेजर से अब तो बहुत सारे एप्स आने लगे हैं, जो आपको वेल रेटेड एप्स होते हैं, जिनको आप यूज करके अपना पासवर्ड उस पर सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। तो उन पासवर्ड मैनेजर्स को यूज करें अपना पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए। सो नेक्स्ट इज रीयूजिंग पासवर्ड अ बैड आइडिया। मैंने आपको बताया कि पासवर्ड को रीयूज ना करें बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि आपने लग क्या किया, आपने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का पासवर्ड सेम रखा है, ट्विटर का भी सेम रखा है, ठीक है। तो चलो एक अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड हैक हो गया, या किसी अटैकर ने आपका वो ले लिया, या किसी को पता चल गया और वो उसका मिसयूज कर रहा है। तो थिंक, अगर आपका एक अकाउंट का पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड, क्रेडेंशियल पासवर्ड का कोई यूज कर रहा है, और अगर वो एक अकाउंट से यूज कर रहा है, ठीक है, बट उस आप दूसरे को तो बचा सकते हैं ना, बट वो तीनों को यूज कर रहा है, तो वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए, आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। So yeah, breach on one is a breach on all. If someone hacks one account and find the password, they can access all other accounts with the same password. Higher chance to hacking, less control. अब अगर हमारे पास किसी भी पर्सन का एक क्रेडेंशियल पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड है, तो हम फॉर श्योर हम उसको यूज करेंगे उसके दूसरे अकाउंट्स में जाने के लिए, या उसका दूसरा अकाउंट के लिए। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अपना पासवर्ड को चेंज रखें। वो कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि चलो ठीक है, एक पासवर्ड, एक अकाउंट को हमने, हमारा हैक हो गया, कम से कम हमारे दूसरे पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड बहुत बिल्कुल सेफ रहे, कम से कम दूसरे अकाउंट। तो जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत रील्स यूज करते हैं, राइट, तो वो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल बना देते हैं, इंस्टाग्राम पे चैनल बना देते हैं, तो बहुत हैक हो रहे हैं आजकल, सबको पता है। तो जब वो एक आपका, अगर चलो ठीक है इंस्टाग्राम पे हैक हो रहा है, तो वो इजीली आपका यूट्यूब का चैनल भी हैक कर लेगा। तो कम से कम आपका वहां पे वो चीज़ सेफ रहे, उस चीज़ को अपना सेफ रखें। तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पासवर्ड, आप लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा ना रखें, अगर ना रखें तो क्या हो सकता है, कैसे एक हैकर और कैसे अटैकर आपके पासवर्ड को इजीली क्रैक कर सकता है। तो आयुष आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि कैसे एक अटैकर आपके पासवर्ड तक इजीली उसको क्रैक, हैश को क्रैक कर सकता है। सो यस आयुष प्लीज। Thank you, Diksha. Now I'm gonna share the screen and gonna tell you how passwords are stored and how they can be easily cracked if the attacker knows actually what is the hashing algorithm or what is the cryptographic value of that algorithm. So just a minute. So let's say it's a website that generates MD5 hashes. MD5 hash generator. It's actually a website that generates MD5 hashes. Here are some MD5 hashes.
Now we are gonna do that. We are gonna collect some common passwords, MD5 hashes. We are gonna make a file and we crack them. So let's start with the password. Let's generate and we see a different MD5 hash. Now let's go to the terminal. Now I have already created the hashes file, that's hash.txt. Now let's see what's in there. These are some common hashes of a common password. So let's try to crack them. We see different types of hashes and we know what are these hashes. कुछ पासवर्ड होंगे, कुछ क्वेरिटी होगा किसी का पासवर्ड, कुछ 1234 होगा, कुछ I don't know. Let's see what's gonna happen. We are gonna use hashcat. Hashcat is a tool which basically crack the MD5 hashes or any hashes. Just you have to mention some. We are not gonna deep dive into the technicality of it, but definitely we are gonna see what it does. We're gonna put the file name hash.txt. Now we are gonna use rocku.txt word list. I'm gonna show you what is in the rocku.txt. Let's run this command. See, we got the password, we got query, we got 123456, we got password 123, and some of you, I'm damn sure that you put I miss her in the password. So that's pretty funny. And this is how hashes are cracked very easily if the attacker knows which on which algorithm. टेबल होना चाहिए, थोड़ा-सा यूनिकनेस उस पासवर्ड में होनी चाहिए। सो द पावर ऑफ लॉन्ग पासवर्ड कैसे मैटर करता है कि आपका पासवर्ड लॉन्ग है, सेफ है या सेफ कैसे-कैसे सेफ हो सकता है। साइज़ मैटर्स इट अ लॉट बिकॉज़ आपका पासवर्ड मिनिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, ताकि जो देखिए जब हैकर जो अभी आपको आयुष ने बताया कि जब वो वर्ड लिस्ट यूज़ करता है या कुछ वो अपनी गेसेबल जो पासवर्ड यूज़ करता है वो कम से कितने कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करेगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 तक जाने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। तो कम से कम थोड़ा-सा अपना साइज़ उसको बढ़ा के रखें, मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का यूज़ करें। सेफ्टी फर्स्ट, use unique password for every account to keep your information safe. Stay one step ahead. Update your password regularly. Monitor your accounts and especially special activity. So yes, use your phrase मैंने बताया आपको और सिंबल यूज कर सकते हैं आप अपने पासवर्ड को गैसेबल बिल्कुल ना रखें कॉम्प्लेक्स रखें थोड़ा सा तो आप पासवर्ड को अपने मेंटेन कैसे कर सकते हैं आप ठीक है तो चेंज पासवर्ड रेगुलरली स्पेशली फॉर क्रिटिकल अकाउंट Never share your password with someone you know, including your colleagues and families and your friends. If you suspect a breach, change your password immediately. Keep software and devices up to protect against vulnerabilities. अगर आपका पासवर्ड अगर पासवर्ड आपका गेसेबल हुआ और या किसी ने भी आपका हैक कर लिया पासवर्ड या किसी को आपके क्रेडेंशियल लॉक सिर्फ एक यही मैटर नहीं रह यही कोई एक तरीका नहीं है कि आपका जैसे आयुष ने किया आपको कि उसने टर्मिनल से आपका पासवर्ड को फाइंड आउट किया तो कई बार क्या होता है इसको हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं जो आयुष ने किया ठीक है तो कई बार क्या होता है कि फिशिंग अटैक होते हैं कई बार आप लोग कॉल्स आती हैं कि अरे आपका लॉगिन पासवर्ड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है उस पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अपना ओटीपी शेयर करें या अपना बहुत पासवर्ड शेयर करें आपका लॉगिन नहीं हो रहा है आपका अकाउंट थोड़ा हैक हो गया है शायद तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें कि कैसे ये अपना ओटीपी शेयर ना करें अपना पासवर्ड बिल्कुल शेयर ना करें अपने से थोड़ा चेक करें उसको मे बी ऐसा हो भी सकता है रियल में भी बट उसको एक बार चेक करें कि ऐसा हुआ है कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है तो या आप उसका ध्यान सो आप किसी स्कूल में हैं अपने अपने वर्क स्टेशन में हैं तो एजुकेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स टू सिक्योर योर पासवर्ड प्रैक्टिस So implement password policies that enforce complicity and rotations. Encourage the use of password manager to reduce the burden of memorizing multiple password. अब मैंने बोल तो दिया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखो थोड़ा सा लेंदी भी रखो और उसको थोड़ा सा
बहुत सारे पासवर्ड को चेंज करो, तो उसको मेमोराइज करना। एक बच्चा, छोटा बच्चा है आजकल, तो देखो कोविड 19 उसके बाद, जब कोविड हुआ है उसके बाद तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी फोन है। तो वो फोन तो यूज कर रहा है, बट उसको इंटरनेट यूज कर रहा है। इंटरनेट को सेफ भी तो होना चाहिए उसको यूज करने के लिए। तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को एजुकेट करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, कि आप इंटरनेट पे जब यूज कर रहे हैं तो कीप इट सेफ। आपका कोई भी डेटा कभी जब इंटरनेट पे आ गया तो वो बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। सो आई मस्ट से प्राइवेसी इज अ मिथ इन द इंटरनेट। आपका कोई भी डेटा जब इंटरनेट पे आता है तो वो कहीं ना कहीं, कोई ना कहीं उसको देख सकता है और देख रहा होगा। तो जब आपका इंटरनेट पे आ रहा है तो थोड़ी सी केयरफुल आपको रहना चाहिए। तो अब बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता है, वो यूज कर रहे हैं, बट एज अ एल्डर्स, यंग वंस एंड योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स, आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे अपना कैसे अपना इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। तो उनके पासवर्ड को आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, उनके पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम अपने कन्वीनियंस के लिए ना अपना पासवर्ड, छोड़ो यार कौन चेंज कर रहा है बार बार, बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो प्लीज अपना पासवर्ड मेंटेन रखें, हमेशा उसको चेंज करते रहें, बार बार टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें, और एजुकेट रहें अपने पासवर्ड के लिए। और सिक्योर पासवर्ड की प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए अपने आसपास सबके लिए। सो कॉमन पासवर्ड मिस्टेक क्या होती है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे, मैंने बहुत बार, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, कि वाईफाई आप लोगों को किसी से, या हॉटस्पॉट आप यूज करते होंगे कई बार, तो लोग उसका पासवर्ड, मैंने जनरली देखा है तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6। अरे, ये पासवर्ड क्या आपको लगता है कि कोई गेसेबल नहीं होगा? अब एक ने मुझे बता दिया कि ये है, मैंने 2 का देखा, 3 का देखा, तो अब तो जनरली मैं सबसे पहले पासवर्ड अगर वो करूंगी ना किसी का हॉटस्पॉट यूज, तो मैं यही टाइप करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हो गया तो वेल एंड गुड। तो ये, इस चीज से आप इसको कॉमन पासवर्ड बिल्कुल ना रखें, चाहे वो आपका हॉटस्पॉट हो, चाहे घर का वाईफाई। सी, घर का वाईफाई भी लोग कई बार मैंने देखा है कि सरनेम यूज करते हैं @1 2 3 4, या सरनेम 1 2 3। अरे सबको पता है ना आपका सरनेम, तो वो तो इजीली आपका वाईफाई यूज कर सकता है। आपका वाईफाई हैक हुआ, आपके वाईफाई से कनेक्ट हुए सारे सिस्टम, सारे डिवाइसेस इजीली हैक हो सकते हैं। तो अपने घरों का वाईफाई का पासवर्ड भी थोड़ा सा स्ट्रांग रखें। इग्नोरिंग पासवर्ड सिक्योरिटी ड्यू टू द कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए अपने पासवर्ड को सिक्योर रखने और बिल्कुल ना रखें, राइट। तो या टूल फॉर मैनेजिंग पासवर्ड, पासवर्ड मैनेजर, मैंने आपको बताया कि पासवर्ड मैनेजर का यूज करो। अवॉइडिंग राइटिंग पासवर्ड एक ज़रूरी है, अगर आपको रिटर्न में, तो मे भी आप रख सकते हैं, बट मैं आपको ये वाला सजेस्ट नहीं करूंगी कि अपना पासवर्ड आप कहीं पर लिखें। वो तो हार्डवेयर में फिजिकली रखना बहुत थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, आपको पासवर्ड मैनेजर करने चाहिए। बहुत वेल रेटेड पासवर्ड मैनेजर आजकल आपको मिल जाएंगे, आपको पासवर्ड सिक्योर और सेफ रखने के लिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, हमारे आप अकाउंट्स यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं सब आजकल, फेसबुक यूज करते हैं, और बहुत सारे अकाउंट यूज करते हैं। उसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे ना, आपको एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा, उसको सर्च करें, उसको ऑन करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी प्रोटेक्शन की जो लेयर होती है उसको एक लेयर एक्स्ट्रा एड ऑन कर देता है। सो यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू एड ऑन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ योर प्रोटेक्शन टू इम्पोर्टेंट अकाउंट्स। तो या यूज दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आपके फोन पे ना, सबके फोन पे आजकल पास ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, आई थिंक। किसी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और आई कॉन्टेक्ट्स में, आई रेटिना कॉन्टेक्ट्स में जो हम यूज करते हैं, फेस में आप वो फेस का जो बायोमेट्रिक होता है वो भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जब है तो यूज करो ना भाई, करना चाहिए ना। आपको डिवाइस, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिवाइस और अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए। तो जब कंपनी आपको सब कुछ दे रही है तो यूज करो, कंपनी आपको यूज करने के लिए ही दे रही है। तो अपने इनकन्वीनियंस के हिसाब से हम कई बार तो एक पिन रख देते हैं, या 4 डिजिट का पिन होता है, वो तो बहुत इजीली, आपको मैंने बोला कैसे बंद हो जाता है, बहुत इजीली उसको अटैक कर सकता है कोई। अपना पैटर्न यूज कर लेते हैं, पैटर्न का तो नॉर्मली आजकल कोई बहुत छोटे बच्चे या बहुत छोटे मोटे वही एक्टर्स ही उसको इजीली क्रैक कर लेते हैं। थोड़ा सा उसको बायोमेट्रिक रखने की कोशिश करें। या दिस इज द टूल फॉर मैनेजिंग योर पासवर्ड।
सो नाउ सिक्योर पासवर्ड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया ना कि आपका डिवाइस और आपकी डेटा को सिक्योर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दूसरा आके आपको ये नहीं बताएगा कि अपना अरे अपना इसको सिक्योर रखें। तो साइबर सिक्योरिटी इज द कलेक्टिव इफेक्ट एफर्ट एवरीवन प्लेज अ रोल इन द मेंटेनिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट by adopting strong password practice. We protect ourselves and our organization for cyber threat. So yes, secure password is the first line of defense against the cyber attack. अपना पासवर्ड को सिक्योर रखें और अपने साइबर विक्टिम या साइबर विक्टिम बनने से अपने को बचाएं और अपने ऑर्गेनाइजेशन आप जिस जहाँ पर भी हो उन सबको सेफ रखें. सो यस, दिस इज द इनफ. आई थिंक आप लोगों को सिक्योर पासवर्ड का मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है. और नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस को साइड रख के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करेंगे और अपने डिवाइस को सेफ रखेंगे. सो नाउ आई वुड लाइक टू से आयुष, अब आयुष आपको मैं एक मलिशियस लिंक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि मलिशियस लिंक क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप लोगों को उसको कॉमन टाइप जो मिस्टेक लोग करते हैं, एक थोड़ा सा लिंक आपके पास आता है और उस पर सिर्फ एक क्लिक करके कैसे आप अपने डिवाइस को पूरा वल्नरेबल बना देते हैं. तो यस, दिस इज आयुष. Thank you, Diksha, for the detailed explanation about the secure passwords. Let me put up my slide. So, yeah, let's talk about the malicious links, what it is and how does it affect our world, how does it affect the teenagers. So, let's talk about it. So, we are going to explore the dangers of malicious links and learn how to identify and protect against them. Let's equip ourselves with the knowledge and let's see how we can defend against them. So, what are actually malicious links? These are the URLs that lead to harmful content or phishing sites that actually extract your data, everything, like from email to your password to your pins to your date of birth, everything. And criminals, obviously, and attackers use these links to spread malware, steal sensitive information, or compromise systems. So it's not very confidential when you are coming and talking about some malicious links. They often appear harmless but can cause significant damage once clicked. Like you are getting an email, like you are getting same kind of Facebook pages. So let's see what are the common types of malicious links. So talking about the types of malicious links, we have three types, commonly known as three types: phishing links, malware links, and drive-by links. So let's first talk about the phishing links. Redirect users to fake websites to steal login credentials or personal information. Everyone, I think, from the audience is like a teenager, so I think most of us know what a phishing is. But let me explain it to you. Let me explain in detail that what it does. Attacker will send a link that will look similar to some kind of social media or some kind of Facebook or some kind of net banking apps. So it will look similar to that. And if someone is not smart enough, if someone not catches the what's the fault in the website or that particular link, so they will actually give sensitive information like their passwords, their user ID, and easily one can brute force through your IDs like Facebook and all. So in nowadays that's pretty hard even after getting the credentials, but it's actually important to be safe against the malicious links. So let's talk about the second type, malware infected links. So they actually send you a link, you will open it, and it will do nothing. And something will be downloaded in your Android device like Facebook and all. So in nowadays that's pretty hard even after getting the credentials, but it's actually important to be safe against the malicious links. So let's talk about the second type, malware infected links. So they actually send you a link, you will open it, and it will do nothing.
and something will be downloaded in your Android device, in your computer, in your PC, in your system. That's a system. So it will affect your PC's performance. It will affect your Android performance. It will steal all the data. It will download. The attacker will actually download all the data to their PC, to their system. So I think that's a really kind of scary when it comes to malicious links. And as a kid and as a teenager, everyone wants to interact with the social media. And if something seems similar, and let's say sixth, seventh kids does not realize that this is not a Facebook and this is something fishy. So I think there will be a very good defense if they know what is this, what a malicious link is. So let's talk about the third topic, drive-by download links. Let's say you are playing a game. You want some aimbot because you're not good at that game, and you want some aimbot. You're going to a website, to a particular website. There are thousands of websites that's vulnerable, and obviously they're gonna welcome you. They're gonna let you download by drive, and they are gonna take all the data from the PC. They will do OCR. OCR is actually uh, getting the screens of the system, getting the screens of the Chrome, and everything, every from passwords to settings. They will have you on their knees. So let's say they are actually gaining passwords that you save on the Chrome while logging into social media, net banking, and many other apps like shopping apps, Myntra, Amazon, Flipkart. So drive-by links is actually a very dangerous when you are actually greedy about something, when you're not happy on what you are getting. So how do cyber criminal use malicious links? Let's say let's say talk about social engineering, one of its type, exploiting vulnerabilities, one of its type, bait and switch. So let's talk about cyber criminals. They use actually psychological manipulation to trick people into clicking on links, often disguised as urgent news or social media notification. Like there was a browser once upon a time, everybody would be aware of UC browser. So UC browser was a very active browser which send continuous notifications like do watch this, do watch that. And in this trend of AI, we are getting actually very much notifications like whatever we are seeing, we want to shop for this, getting the ad the next time we are visiting other sites or other social media sites. So that's very scary when you are not actually relying on it. Second point is exploiting vulnerabilities. Cyber criminals take advantage of weakness in software and use malicious links to inject malware into your device. Let's say there is a website, and on the website there are certain multiple ports open, and what are the services running on that particular port? And if the service version is vulnerable, they can inject a reverse shell. It's a technically deep topic, but yeah, I would actually suggest that it's really scary. So keep your systems updated and don't compromise when it comes to malicious links. Don't click them. Third is bait and switch. Cyber criminals redirect you to fake login pages where they steal your credentials and sensitive information. As we have talked earlier, they will create a Facebook look-alike. They will create a Facebook page look-alike page login, and that's really scary. If a kid is actually going for joining Facebook and they are actually diving into it, they will easily give the credentials and their messages will be leaked, and that will give a major effect on the child's health and mental health. So let's come. We will talk about the cyberbullying in the next slide. That's our third topic. But yeah, for now, let's stick to the malicious links. Let's say what are the consequences. I've already told you about the sensitive information they get leaked, and it's really scary. So let's talk about the first point. What are the consequences? First point is system infection. Malware infects your system, posing potential threats to your privacy, data, and finances. So
if there is a company who is running a certain Windows server, which is very, very, very vast, which is very vulnerable, and there are financial documents on that in that office in that company. There is a who provides financial services to the startups and all. So everything from the pitch deck to the financial services to their data. Let's talk about the whole data. It will completely be vulnerable to an attacker, and they can extract the information from the company. Company will suffer loss like financial losses. Mentally, employees will be fired from the company. So there are many. Like let's talk about the Ames attack, which recently held in I think March or April. Correct me. So in that ransomware attack, one of the employees just clicked it, and everything was infectious, and even the reception computer was infectious when the malicious link was clicked. So yeah, it's the whole system, the whole database is affected when you actually click the link. So second is data theft. Like yeah, they can steal your personal data, financial data, and you will suffer financial loss. Already discussed. Third comes to the network intrusion. So let's talk about the network attacks. We will not go deep dive into it, but I will tell you that your connection wherever you are connected to the ISP or something. So that's actually very vulnerable. You are never safe when you are connected over the internet, as we earlier talked about the secure passwords. So when you are on the internet, stay safe. They can capture the packets, they can attack your networks, they can attack your Wi-Fi, and your Wi-Fi can be hacked. Not just keeping a secure password is the only measure you have to do. So yeah, network intrusion. Let's come to the next slide. Let's see how can you identify a malicious link. So first is looking for suspicious elements. Like if you are a good researcher, if you are a good detective in your school or in your home, and you love to find those things that's hidden. So first, go for the website, go for the malicious links, click on it, and just compare to the official website. How is it looking? How are the graphics? Is the graphics very enabled? Is the graphic very looking similar to that? Just find the spelling errors. Do your research. Do your complete research. Double check the URLs. Let's talk about the URLs. If there is a HTTPS site and is this and there is a HTTP site, where you wanna go? Where you wanna visit? Obviously, HTTPS because it's secure. The website which does not have SSL certificates, that's security certificates, you will have to face the consequences when you're clicking on a HTTP website. You're sharing your data, you're actually vulnerable to the attackers. So, third is use security tools. Let's talk about security tools. Anyone is using Avast or Norton security. So they secure your PC, they secure your system, and that's there comes a very different types of programs in that antivirus programs. So there comes anti-phishing, anti-spam software to detect and prevent malicious links. So be aware of it. I'm going to show you how does a malicious link website looks, and you should not visit on that website. So this is a website. There is a outlook.live. This site has been reported as unsafe. This is a Chrome browser, and it looks like there is something fishy in here. It's obviously showing it here dangerous. You cannot report it as unsafe. Microsoft recommends you don't continue to this site. So Microsoft Defender blocked this and does not want you to visit this site. So stay safe. Let's talk about this Netflix website. Obviously, the HTTPS is obviously there, but let's talk about this website. If this is coming into your email, we are sorry to say goodbye. Restart your membership and all. Don't click this restart membership. Go into your Netflix,
official Netflix app or official Netflix website, check your membership date, check your expiry date, then visit through the Netflix official site. Don't go on something that's coming on your notification. It's a malicious link. So yeah, coming to the next slide. What are the best practices for avoiding malicious links? Like we have discussed earlier in the first presentation, use strong passwords. So you have to make them complex to guess and avoid reusing them. And we have discussed this, obviously, multi-factor authentication for an extra layer of security. So we will jump on to the second topic. Second topic is stay updated. Likewise, I said, if you have installed antivirus, it's not just you should install an antivirus. You have to update the antivirus. You have to update the system. It's it's just a 2 minute time before you start your work. Obviously, some updates are bigger and it can take time, but you definitely go for the updates, the Microsoft which actually recommends, or the Linux, or anything, or if you're using Mac OS. Use up to date browsers because they are updating it for the security purposes. Like if someone is breaching on that version, on that particular version, please do update your browsers. If the update is coming from officially, don't go again on the site and click on the link and go download a website that's more safe. No, that's not the point. And be cautious. Likewise, I said, compare and do your everything. Do your research. Do your proper research. Be a detective. Be a cybersecurity head. Like someone is actually going through the website and finding faults. What is fishy with this website? So be intelligent when it comes to clicking on malicious links. So yeah, let's say what we got on this. Let's talk about the conclusions and key takeaways. So first is stay informed, stay informed, and stay updated about the data and about the news that you are listening around your environment, around your circle. And if a teenager is sending you a link, ask them why you're sending them. Just question them, just completely question them. Don't click the link. If they have said don't click the link, obviously some teenagers mindset is that what is in it, we have to click that link. And we have all done something notorious in the family or with the friends. So yeah, so stay informed, stay updated, be vigilant, and use best practices means matlab basically आपको maximum you have to utilize your power to identify what is wrong in that website and protect your privacy. Don't upload everything on the social media when it comes to malicious links. Many of us go for the mod APK because we don't like hearing apps and we don't like paying also as an Indian, obviously. So we go for the mod APK, we download it, and it's running fine, absolutely fine. It's actually the mod APK, but they are actually having your data. They are actually having your Gmail. They are actually having your date of birth. They are actually having your other social media accounts connected to that Gmail. So just confirm things like you don't have to download mod apk, you don't have to go for something aimbot that's available on the PC. It will infect your PC and you will end up formatting it. Sometimes formatting does not help. Some viruses obviously remain in the RAM and it consumptions, and there are viruses that slow your performances. So be very aware of it. And let's dive into the consequences while after getting something diving into malicious links and how it affects a teenager. So let's talk about the third topic, which Diksha will present, and I'm gonna share the screen. So yeah, over to you, Diksha. Okay. Thanks, Ayush. And hello, everyone, again. स्ट्रांग रखो
आयुष ने आपको बताया कि अपना malicious लिंक्स पे क्लिक ना करो। तो चलो ठीक है, हमने लिंक पे क्लिक भी नहीं किया, हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यूज़ किया, बट मैंने आपको पहले बताया ना कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ इन द इंटरनेट। आपका कोई भी डेटा जब इंटरनेट पे आ जाता है, वंस समथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट, इट इज़ आउट देयर फॉरएवर। कोई भी कभी भी उसका यूज़ कर सकता है। बहुत ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब अब भी आप अगर इंटरनेट पे हो, तो आप बहुत वल्नरेबल हो सकते हो। आप अपनी सेफ्टी का यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी वो बिल्कुल वो जैसे अभी आयुष ने बताया कि ये फायरवॉल्स, एंटीवायरस आप यूज़ करें, बट उस पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ऐसा नहीं है कि वल्नरेबल नहीं हो सकते। कहीं न कहीं से कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिल ही जाती है, जिसको हैक करना होता है या अटैकर को, ठीक है? तो सो नाउ अगर आप क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम हैं, अगर आप कहीं न कहीं से किसी न किसी वजह से विक्टिम बन चुके हैं और आपके साथ कुछ साइबर बुलिंग या कुछ भी साइबर क्राइम हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? क्या-क्या आप कर सकते हैं? मैं आपको अब इस टॉपिक पे बताती हूँ। सो नाउ यस, साइबर बुलिंग। सो सबसे पहले तो डोंट बी अ साइबर विक्टिम एवर। To learn about the impact of cyberbullying and what can be done to prevent it. So yeah. So now it comes to the definition of cyberbullying. What is the cyberbullying? Types of conduct, perpetrators and victims. So cyberbullying मुझे लगता है सबको स्कूल में पता होगा कि बुलिंग क्या होती है। आपके स्कूल्स में, आपके वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ आज तक ऐसा नहीं हो सकता कि बुलिंग ना हुई हुई होगी आपको। तो आप क्या, तो वो बुलिंग, जब साइबर बुलिंग इज बुलिंग बट इट हैपेंस ऑनलाइन, जब आप इंटरनेट पे या जब आपका ऑनलाइन कोई कम्युनिकेशन करते समय या कुछ भी आप जब कुछ इमेजेस आप अपलोड कर रहे हैं, उस समय जब आपकी कोई बुलिंग होती है, तो वो आपको साइबर बुलिंग होती है, ठीक है? साइबर बुलिंग इज व्हेन अ पर्सन हैरिश, threatens and humiliates someone else online. So now types of conduct. This could be negative comments, spreading rumors, or sharing private information without consent. See, आपको अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? आपने एक कोई बात प्राइवेसी, आपकी कोई प्राइवेट सी बात है, आपने उन अपने 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनको बता दिया। तो आपको लगता है कि वो 10 फ्रेंड्स से आपकी वो बात आगे नहीं जाएगी किसी और तक। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। कहीं न कहीं कोई न कोई इतना वल्नरेबल हो सकता है कि वो किसी न किसी को वो बात बता देगा। तो ये तो इंटरनेट है भाई, यहाँ तो इतना बड़ा नेटवर्क है, अगर आपने कोई बात अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट? तो ये सबसे बड़ा एक बुलिंग है होता है कि अगर आपके पास कुछ लगता है आपको कि किसी को कहीं न कहीं तक ये नुकसान पहुँचा सकता है, तो प्लीज़ स्टॉप, डोंट फॉरवर्ड इट। और जब आपकी सिर्फ एक ये आपको किसी को जैसे बॉडी शेमिंग करना या किसी के लिए कमेंट कर देना नेगेटिव कमेंट, सिर्फ ये यही सिर्फ एक साइबर बुलिंग नहीं होती है, राइट? जब आपके पास एक व्हाट्सएप पे, आपके इंस्टाग्राम पे कोई एक रील्स आ रही है या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, आपने उसको पढ़ा और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया बिना ये जाने कि वो सही है या इट इज ओनली अ र्यूमर्स। तो जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो प्लीज़ चेक इट आउट कि वो सच है या नहीं। अगर वो आपको लगता है कि सच है, आप थोड़ा-सा उस पे रिसर्च करो, फॉरवर्ड करने से पहले। ये थोड़ा-सा अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिविलाइज़्ड पर्सन की होनी चाहिए, सिविलियन की, जब वो इंटरनेट पे परफ़ॉर्म कर रहा है या इंटरनेट ऑनलाइन जब वो आ रहा है, ओके? So often the built and anonymous victims are left without any real recourse and defense. See, अगर ना आप साइबर विक्टिम बन जाते हैं, तो जो साइबर अटैकर है ना, साइबर बुलिंग जो कर रहा है, वो बहुत अनोनिमस होता है, उसको इजीली आपको नहीं पता होता है। तो कई बार हम उसे जाने देते हैं कि चलो ठीक है, हो गया, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। विक्टिम्स क्या होता है, who is the victims, affect anyone regardless or age, gender or social status. Victims can be experience depression, anxiety, even suicidal ideation. एक जब विक्टिम बन जाता है कोई भी बच्चा और या कोई भी इंसान, तो वो उसकी जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इतने डेंजरस हो सकते हैं कि
उसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इवन उसको ईटिंग और स्लीपिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो और वो बहुत सारे प्रॉब्लम फेसेस करने की तो बहुत बड़े-बड़े स्टेप उठा देता है, राइट? तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखें। तो थोड़ा-सा स्टैटिक्स पे आ जाते हैं, जनरल स्टैटिक्स पे। आप लोगों को पता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता होगा, इंडिया में 48% ऑफ चाइल्ड जो साइबर बुलिंग के विक्टिम्स हो रहे हैं, ये तो सिर्फ 48% वो हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं। और कितने बच्चे ऐसे होंगे जो सामने आते ही नहीं है, अपने इवन दो अपने पेरेंट्स और अपने ओल्डर वंस के आगे भी, तो वो रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, उनके पेरेंट्स तक भी ये बात नहीं पहुंचती। तो 48%, या इट इज़ अ, आई थिंक इट इज़ अ ह्यूज नंबर कि इंडिया में 48% जो साइबर बुलिंग हो रही है, राइट? और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपके अदर कंट्रीज में भी, कैनेडियन में, कनाडा में हर एक 10 में से 3 चाइल्ड इज अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। आई थिंक इट इज अ ह्यूज नंबर। हर एक 10 बच्चे में एक 3 बच्चों का साइबर बुलिंग होना, आई डोंट थिंक इट इज राइट। तो साइबर बुलिंग के लिए ना, अपने आप अपना पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा होना पड़ेगा कि वो इजीली उससे इतना वो ना करें। थोड़ा-सा कि अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा-सा इंटरैक्ट करने की कोशिश करें, तो ही वो बताते हैं। नहीं तो बहुत सारे चिल्ड्रंस और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स तक को भी नहीं बता पाते कि हाँ, वी आर द विक्टिम और हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो नाउ कम्स टू द फॉर्म्स ऑफ साइबर बुलिंग। कैसे-कैसे साइबर बुलिंग की जा सकती है? नंबर फर्स्ट, ट्रोलिंग, एक्सक्लूजन, हैरेसमेंट, posting initially inflammatory or offensive comments to elicit a reaction, deliberately leaving out someone or excluding them for social interaction, or even harassment, sending repeated messages, making abuse threat, or spreading rumors। जब आप क्या करते हैं, rumors आपने फैला दिया, जब आपने उसको क्या बोलते हैं, ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया किसी को, और सोशल मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया हैंडलर्स पे या किसी भी अकाउंट्स में, तो कई बार बच्चे स्टार्ट कहाँ से होता है ये सब, बहुत बच्चे, ज़्यादातर ये चीज़ें बच्चों से ही स्टार्ट होती है। सी ठीक है, जब पहले तो स्टार्टिंग में ना फन, एज अ फन हम लोग उसको लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने ये क्या किया, हमने चलो किसी को परेशान करने के लिए अपने फ्रेंड को या इवन किसी भी स्ट्रेंजर्स को हमने क्या किया, उसको थोड़ा-सा परेशान करने के लिए एज़ अ फन हमने उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये तो ऐसा-वैसा करके। बट ध्यान रखें कि उसकी एक ना लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत फन करते-करते एक इतना हैरिश तक पहुँच जाए कि उस जो विक्टिम है उसके बिल्कुल मेंटल बिल्कुल इतना प्रेशर आ जाए कि वो कहाँ तक क्या-क्या उसके साथ हो सकता है। तो जब आप एज़ अ फन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा एक लिमिट में रखें। और थोड़ा-सा ध्यान रखें, थोड़ा-सा काइंडनेस बिहेव रखें अपना कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है दूसरे के साथ। अगर ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके साथ कोई इतना कर रहा है, तो क्या आप उसको झेल सकते हैं? क्या वो आप लोगों के लिए सही होगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए? बिल्कुल नहीं, आई थिंक। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें इस बात का जब आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, एज़ अ फन एक्चुअली। तो ये स्टार्ट तो यहीं से ही होता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, आपस में थोड़ा-सा किसी की लड़ाई हो गई, तो वो वहाँ पे उसको, क्योंकि सामने तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो एज़ अ इंटरनेट का यूज़ करके वो उसको साइबर बुलिंग स्टार्ट कर लेता है। उसकी कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है ऑफ कोर्स, तो उससे वो उसका स्टार्ट कर लेता है। तो थोड़ा-सा आप उसको ध्यान रखें कि नहीं यार, थोड़ा-सा काइंडनेस बिहेवियर रखें अपना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिंग। आपके इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं अगर आप साइबर बुलिंग के विक्टिम हैं? आपका इमोशनल टॉन हो सकता है, एकेडमिक्स एंड वर्क परफॉर्मेंस में आप उसको देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपका हो सकता है। सी जब बच्चे साइबर बुलिंग हो जाती है ना, तो उस जब तक वो बच्चा आपके सामने खुद से ना आ जाए, तो आप लोगों को उसका पता चलना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा-सा पेरेंट्स और टीचर्स को मैं कहूँगी, आप अपना थोड़ा-सा ध्यान रखें कि उस बच्चे या किसी इंसान, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके
बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है क्या? थोड़ा सा उसका इस बात का ध्यान रखें प्लीज। तो उसका फिजिकल हेल्थ में क्या असर पड़ सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ में क्या असर पड़ सकता है, सोशल आइसोलेशन वो कर लेता है। दे सबसे पहले तो दे फील अलोन, सैड एंड स्केर्ड, फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री एज वेल। So cyberbullying can lead to physical symptoms such as headache, stomach problem and changes in appetite. मैंने आपको बताया ना कि जब विक्टिम हो जाता है ना, इवन उसको ईटिंग और स्लीपिंग में तक प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी या इवन सुसाइडल अटैक भी वो अपने लिए कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसी की मेंटल हेल्थ के लिए। और ये जो स्कार्स होता है ना, इवन ये लाइफ टाइम आपके यूज़ होते हैं या आपके लाइफ टाइम रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है इन स्कार्स से बाहर निकलना किसी भी विक्टिम के लिए। सोशल आइसोलेशन वो कर लेता है। Victim often feel ashamed, embarrassed, and hopeless to start withdraw from others. Right. So he want to avoid public places, activities, have trouble where they eating and sleeping. Also try to hurt themselves. ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बी अवेयर द साइन, अगर आपको कि अपने अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चे पे ये अगर ये चेंजेस आपको लग रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बी अवेयर होने की आपको भी ज़रूरत है। सो सडन चेंजेस इन बिहेवियर, विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज एंड अवॉइडेंस डिजिटल डिवाइस। Encourage open communication, create an environment where victims can feel comfortable discussing their experience. थोड़ा सा आपको, जब आपके साथ ये चीज़ हो जाती है और आपको पता भी चल गया कि चलो ठीक है, हमें ये भी पता चल गया कि ये बच्चा या ये स्टूडेंट आपका या ये बच्चा या आपका कोई फ्रेंड साइबर बुलिंग का विक्टिम है और आपको आपको पता चल गया, तो थोड़ा सा अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा उसको इनकरेज करो, उससे बात करो, उसके लिए एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो और वो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करे, राइट। साइबर बुलिंग प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती हैं? मॉनिटरिंग ऑनलाइन एक्टिविटी, डिजिटल इंटेलिजेंस, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। तो सबसे पहले तो मॉनिटरिंग ऑनलाइन, पेरेंट्स, टीचर्स एंड गार्जियन शुड यूज मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर टू कीप ट्रैक ऑफ चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज। सी मैंने आपको बताया कि कोविड जब से स्टार्ट हुआ था, तो अब बच्चे बाहर तो खेलने जा नहीं पा रहे थे, तो पेरेंट्स ने क्या किया, अब उनकी क्या एजुकेशन ऑनलाइन होने लगी, तो फ़ोन भी देना ज़रूरी है, उनको डिवाइसेस देना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आपने डिवाइसेस भी दे दिया, आपने फोन्स भी दे दिए, उसको इंटरनेट भी दे दिया, बट कीप मॉनिटरिंग कि आपका बच्चा क्लास ले रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो यूज भी करेगा, राइट। अगर आप उसके पास फोन है, डिवाइसेस है, तो हर कोई अपना अकाउंट्स हैंडल भी करेगा, उसके उसके उसकी पीडीएफ आ रही है, उसके पास कुछ भी आ रहा है, लिंक आ रहा है, तो वो गलती से भी उस बात पे वो क्लिक ना करे। मलिशियस लिंक्स हो सकते हैं, जैसे कि आयुष ने आपको बताया। तो थोड़ा सा आपको मॉनिटरिंग और एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो yes, parent, teacher and guardian should be use monitoring software to keep track your children's online activity. Tech, teach digital intelligence, teach children about the importance of cyber awareness, intelligence to protect themselves online. Report and block. Encourage victims to report and block bullies and tag them. That is not their fault, and they have nothing to be ashamed of. So अब क्या होता है कि विक्टिम्स तो आप हो गए, आपको पता भी चल गया, आपने थोड़ा सा उनको इन्वायरमेंट भी दे दिया, आपने आपको पता चल गया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने आपके साथ एज ए ट्रस्ट आपको सब कुछ बता दिया। तो कई बार क्या होता है कि चलो बता दिया, अब पेरेंट्स क्या होता है उसी बच्चे पे चढ़ने लग जाएंगे कि यार ये तो तूने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। तो आप ध्यान रखें कि वो ऑलरेडी ही और शी इज ऑलरेडी विक्टिम। वो ऑलरेडी इतना मेंटल प्रेशर है उसके पास, वो इतना मेंटल डिप्रेशन है उसको। तो उसको ऐसा वो ना करके उसे एजुकेट करो कि ये तुम्हारी गलती नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको अवेयर और एजुकेट और अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। प्रमोट साइबर अवेयरनेस, एजुकेट इंडिविजुअल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइबर बुलिंग, encourage digital empathy, foster empathy and respect for other feeling and interacting online, responsible digital citizenship, tech responsible online behavior and the importance treating other with the kindness। अब हमने रिपोर्ट, अब
रिपोर्ट करते हैं। अब मतलब आप विक्टिम्स को ना ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो हुआ है, आप जो बुलिंग आपके साथ हुई है या क्राइम हुआ है, उस चीज़ को रिपोर्ट करें। बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया 48% चिल्ड्रन हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। तो इट इज़ अ ह्यूज नंबर, बट ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है, हम तो यहाँ से बाहर आ गए तो अब इट्स ओके, अब जो हो रहा है डजेंट मैटर। बट प्लीज ध्यान रखें कि आपके साथ जो है, जो हुआ है, वो आगे किसी और के साथ ना हो, राइट? तो उसको रिपोर्ट करें। एंड रिपोर्ट करने की जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट्स द वेबसाइट इज cybercrime.gov.in। आप इस पे जाके अपने ये साइबर बुलिंग की कंप्लेन कर सकते हैं, साइबर क्राइम की कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तो रही विक्टिम्स की बात कि एज अ विक्टिम आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अटैकर पे कि साइबर बुलिंग जो हो रही है। तो जब आप अपने बच्चे को, अपने किसी को भी, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट पे काम कर रहे हैं या इंटरनेट पे जा रहे हैं वो, तो उनको इस बात से भी अवेयर कीजिए कि जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो डिजिटल एम्पैथी आप रखें। डिजिटल रिस्पॉन्सिबल, बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप। जब आप इस पे इंटरनेट पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि आपके किसी कम्युनिकेशन करने से या कुछ भी आपका ये पोस्ट रीपोस्ट करने से या कोई कमेंट करने से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई मेंटल हैरिश तो नहीं हो रही है किसी को। और थोड़ा सा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ठीक है, आप कमेंट करने से पहले थिंक बिफोर कि यार ये किसी के लिए कुछ नुकसान तो नहीं हो सकता है, ये किसी को एंजाइटी तो नहीं क्रिएट कर सकता है। तो इस अपने से अब खुद को भी हमें एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप होना बहुत ज़रूरी है। और अपने बच्चों को भी इस बात के लिए बताएं, अवेयर करें कि आप जब ऑनलाइन आ रहे हैं तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये सिर्फ एक बुलिंग ही तक नहीं रह सकता। अगर आप अटैकर है ना, तो आप पे लीगल एक्शन भी बहुत हो सकते हैं और ये बहुत आगे तक भी जा सकते हैं, राइट? तो यस, रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना करें बिल्कुल भी। सो यस, अब साइबर विक्टिम क्या होता है? आपके पास अगर आपको लग रहा है ना कि साइबर विक्टिम आप हैं, तो प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड। अगर आपको कोई लग रहा है कि यार ये कुछ कर रहा है या कुछ आपके साथ गलत चीजें हो रही है, तो फर्स्टली डोंट रिस्पॉन्ड और ब्लॉक ब्लॉक दैट पर्सन। और अगर फिर भी आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो अपने किसी एल्डर वन से बात कीजिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपकी ये आपके कम्युनिकेशन को, आपकी जो आपके साथ कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं उस चीज़ को समझे, तो उनके साथ बात कीजिए। ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो यस, रिपोर्ट देम is the one of the most important. Encourage victim to report cyberbullying incident to a trust adult and authority figure. School and organizations should have clear reporting mechanism in the place to handle cyberbullying case promptly. ठीक है। तो रिपोर्ट देम ऑन द साइट और ऐप, जो मैंने आपको बताया, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ऐप है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो उस वेबसाइट और उस ऐप की रिपोर्ट ज़रूर करें। सेट अप योर प्राइवेसी सेटिंग, गेट हेल्प बाय टॉकिंग टू एडल्ट। और अपनी प्राइवेसी सेटिंग को ज़रूर, अपने सेटिंग्स को ध्यान रखें कि वो उसमें कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, कुछ आपने यस और गलती से कुछ क्लिक तो नहीं कर दिया है, जैसे अभी बताया कि मलिशियस लिंक पे आप कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी, कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो प्रमोटिंग पॉजिटिव ऑनलाइन बिहेवियर, encourage the practice that think before you post to avoid unintentionally or intentionally causing harm. Spread positivity, engage to uplifting the supportive interactive online. जब ठीक है यार, देखो ना, अगर कोई विक्टिम भी है, कोई अटैकर भी है, बहुत सारे, हम किसी को रोक तो नहीं कर सकते जाके कि आप ऐसा मत करो या ऐसा करो। तो कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं ना। एक पॉजिटिव बिहेवियर, एक पॉजिटिवनेस तो हम इंटरनेट पे भी ला सकते हैं। हम जब सोचते हैं कि हम एक एनवायरनमेंट अपने आसपास ऐसा क्रिएट करें जो पॉजिटिव रहे, तो ऑनलाइन भी तो एक डिजिटल जो वर्ल्ड है वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे एक पॉजिटिविटी हम स्प्रेड करें। तो या आप नेगेटिव और र्यूमर्स को स्प्रेड ना करके पॉजिटिविटी को भी आप स्प्रेड कर सकते हैं।
Cybersecurity and privacy protect personal information, advise individual to adjust private setting to limit access to their online profiles, use a strong password to enable two-factor authentication, private unauthorized access, आपके सिस्टम को, आपके डेटा को सिक्योर रखने के लिए, आपके अकाउंट्स को सिक्योर रखने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया कि उसको आप ऑन रखें हमेशा. Empowering bystanders, support and resources, providing information about helplines and organizations that offer support to victims of cyberbullying, encourage individuals to seek help and share their experience to raise awareness. जब हमेशा ना किसी विक्टिम को और या किसी अटैकर को भी, जब अटैकर को मे बी अटैकर ने आज अटैक किया, या बच्चे जो मैं बोल रही हूँ कि एज अ फन उसको लेते हैं और बहुत ज़्यादा तक वो चला जाता है. तो जब किसी कोई इसका विक्टिम हो रहा है ना, तो अटैकर को भी जब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जब आपको रियलाइज हो रहा है कि यार दिस इज माय मिस्टेक, तो उसको थोड़ा-सा ना इनकरेज आप भी करें, और जो आपको पता चल रहा है दूसरा है उसको भी करें कि आप ऑनलाइन उस चीज़ को शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस एज़ अ अटैकर और एज़ अ विक्टिम, कि क्या आपने मैंने ऐसा किया और इससे ये नुकसान मुझे भी हुआ और विक्टिम को भी हुआ, तो दूसरा पर्सन इसको अप्लाई ना करें. और विक्टिम को भी अपना रिपोर्ट और अपना और ये जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए कि एज अ विक्टिम आप लोग आपको क्या क्या फील हुआ, कैसे हुआ, ताकि जो दूसरा अटैकर है उस चीज़ को ध्यान रखे दूसरे कभी किसी और को विक्टिम करने से पहले. So yes, conclusion. Now comes to the conclusion. So cyberbullying is a real issue with the significant consequences. हमने देखा कि कितने सारे गलत consequences हो रहे हैं mental health पे. So yes, this is the real issue. Let's foster empathy, respect, and responsible digital citizenship to combat cyberbullying together. By raising awareness and working collectivity, we can create a safe or competitive digital world. So yeah, let's let's knowledge ourselves to need to safety and save the digital world, and let's work together to create safer and more respectful environment in the digital world. So yes, this is the cyberbullying awareness presentation. Thank you. So let's come to the Ayush. Now आप लोगों ने सबने वीडियो फेक और ऑडियो फेक के बारे में सबको पता होगा, तो आज अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हमारी उसी पे है और आयुष आपको इसके बारे में फुल नॉलेज आपको देंगे. देन कम्स टू द आयुष. Thank you so much, Diksha. That was a really good presentation on cyberbullying. And obviously, अब जाके sigma male बन के woman मत comment करना. Understand this and be supportive in your friend circle and all. So या let's come to the voice and video faking presentation. So what's it about? So let's come. We will explore the risk associated with the voice and video faking, also known as deepfakes, and we will deep dive into what is a deepfakes and discuss the strategies to identify and protect against them. This is a major cyber threat, and we are getting many cases. Many means a lot of cases in India, in different parts of India actually, and the majority of people are becoming victim in this online safe space. So let's dive into it, and let's see how it threatens your safety and security online. So let's talk about what it is, voice and video faking. Everyone is using actually a voice changer on the Discord when they are playing games. When the kids are playing games, they are using a voice changer. That was a very short synopsis of a that was a very short example that what an AI can do, what an AI can sample. So we are we will dive into it and we will understand what deep fakes is. So deepfakes involve the use of artificial intelligence and machine learning to manipulate audio and visual content. They can alter voices, create fake videos, and mimic individual convincingly. While deepfakes have potential creative uses, they also pose
significant risk. Like I told you that there are many cases around the country that we are facing, especially girls and the teenager girls. They are actually facing very brutal blackmail because they have uploaded a photo and things that we cannot talk about, but you can understand this. This is a very real issue in the power in the AI field in an AI industry. So let's see. Social engineering, first topic. Tricking victims into divulging sensitive information over the phone or video calls by impersonating authority figures or using emotional manipulation. Like your parents are calling and you know that you have just had a conversation with them and they are calling and you listen a voice on the other call and you're just actually getting suspicious that what's happening. I just got a call. So in that case, you should actually go for actual call with your mother father and confirm with them that this was your actual call or you have called me or you have said this to me. So let's understand what's happening. Attackers are using a very AI tools and very profound AI tools to sample the voices of your father, and they are calling you as a father, and they are asking that don't do this, don't do that, go to them, go to this. So don't believe. First of all, confirm within yourself, confirm with yourself, confirm with your eyes, like this is the exact number. Confirm with the voices, try to find errors in them even if it's perfect. So I'm sure you will sort it out. So let's say what are the we have already explained deepfakes about it, that they use AI and machine learning to sample voices. And let's talk about the voice synthesis, creating artificial speech to mimic an individual voice and speaking style, often used for fraud, phishing, or other malicious activities. Let's let's see artificial intelligence, how they can sample the voices and they can easily make a fool of you and they can manipulate you. They can steal your sensitive information just by calling you and saying like this, I need 30,000 rupees and you have to pay me. I'm in it's really very urgent. So I think that's point of voice sampling that they are actually using. They have heard the voice, the attackers have heard the voice somewhere and they are the bad guys. So they are actually using uh, everything they could have. The AI, they are sampling the voice and they are actually demanding some ransom, some money from you because it's very urgent. The fourth point is video editing, manipulating video footage by removing, altering, or adding content. So we are getting cases about this, and this is all. This was video editing is all about blackmailing and doing criminal things. Cyber criminals use the videos from they take it from social media, and if you are insecure about it, you can go with the Instagram and you can make it private, obviously. But be very aware who are your followers and what are they actually seeing, what are you actually posting. So don't post everything like I've said it earlier. Don't post everything. They can sample your faces. They can sample your actual exactly. We use a neural network and we use artificial intelligence to actually predict the work you're gonna do. Let's say you're going for the shopping and you go on to the Flipkart or Amazon. You bought something or you didn't bought. You just saw a video of it and you came back. That product will advertise all over your phone, on the YouTube, on the Amazon, on the Flipkart, on the Myntra, on your even social sites. So be very aware while you're browsing. And this is an AI, and this is an AI world. So let's come to the next slide. Let's talk about types of voice and video faking. So there are two types, obviously. Everyone knows audio deepfakes and video deepfakes. Audio deepfakes, manipulating recorded voices to create fake audio content. They actually manipulate the samples and they can create a fake audio content. There is one a person who is a DJ. He is sampling voices from playback singers
and he's so perfect in it that you wouldn't recognize that who is singing, and the real one or the fake one. So it's very scary when it comes to voice editing and all. So DJ person are using this. They are sampling singers' voices, and that's really scary. Second, we come to video deepfakes, altering video footage to make it appear as if someone said or did something they didn't. So video deepfakes are actually the sampling of the photos that they extract from the social media. If you're vulnerable, then definitely you're gonna expose your data and the photos, the where you visit, where you go, where what are your behaviors. They can actually predict everything, and according to that, they can even call your parents, like while sampling your voices, and they can say that I'm stuck here, I'm getting kidnapped, and this this is very a criminal thing, and we can go on talking about on this topic, but we should be very very aware of it, that where are we using our voices, where are we using our videos, what are our audiences, and what are we actually showcasing on social media, what are we actually exposing on it. So let's say about video sequencing. Let's talk about video sequencing. First was speech synthesis and deep learning. Let's An advanced algorithm technique used to closely reproduce nuances, facial expressions, and speech patterns of anyone's voice and mannerism. Like we have talked earlier, attackers use neural network engines, and they predict the actual work what you're gonna do by just observing you. Observing is a big thing, and attackers are very good at it. So these are actually topics which are very scary when it comes to talk about video deepfaking. So they are getting very very scary. That was one technique, deep learning. Third is video sequencing. Video sequencing is the manipulation of the sequence or arrangement of images to present a different picture of reality that does not exist. Let's say your neighbor is going to Paris. They have told you that they are going to Paris, but they are not actually visiting Paris. They are just at home clicking the pictures, and they are manipulating the images with the help of an AI, and they are saying that we were in Paris. So that's a point of video sequencing. That's really easy. You just have to put faces, and that's really very easy. So let's talk about identifying a deepfake, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि deepfakes क्या है. So looking for inconsistencies in the audio or video quality. So there is one account on the Instagram who is using faces, and everybody was so confused that he's an old person or a young person using an old filter. So he was a young person who is using an old filter, and he is making memes out of it, memes jokes out of it, and making reels on it, and he is getting famous. So that's a perfect example that how perfect AI can be when it comes to providing filters and changing your faces, and nobody can actually identify. Let's talk about how can we identify. If coming to the sampling your voices, there is a method. When you hear a voice, when you hear a singer's voice in a form of AI, you will see a very disruption, inconsistencies in the audio or video quality. We will talk about video also, but obviously audio also, including unnatural movements and facial expressions. Like you get to the border of the face, you get to the actual audio, you are listening to the audio, or you are actually recognizing the inconsistency on the audio. So pay very deep attention to the videos and audios when you are listening to it. Go for the details in the videos, like hair, shadows, and lightning may reveal may reveal discrepancy. So, like,
if you're it's okay, like you're getting a video from your known ones, and it's looking the same, like that they are actually recording the video and sending it to you. That's not the point. Verify where it is coming from. Like um like the attacker send you or the original one send you. Call them and ask them that is this a video of you that you really recorded it, or is just an AI that somebody has sent. Do verify the content authenticity, cross reference, compare the content with reliable resources to verify its authenticity. Use digital forensic tools. Let's this was our second topic, forensic analysis. Like everybody wants to deep dive into what's actually going wrong. Some tools can help analyze images and videos for signs of manipulation. Like there are many forensic tools that you can actually analyze that what are the details, where it's sharpened, what are the contrast, what's the saturation. So many things we can find on it. Third is machine learning. If you know how an AI works, or and how a data science student works, how a machine learning student works, so they will be actually able to identify the patterns and in the data, the actual data set, and how it's working, how it's predicting that the face should be like this. So yeah, so obviously social media is fake, so there is no genuine person there, and everybody is posting, some are posting AI pictures. But when it comes to individual, so it becomes scary. So let's come to the next slide. The consequences of voice and video fake. First is loss of trust. Deceptive videos or voice forgeries can shatter trust in individuals or organizations. The loss of a reputation may have irreversible consequences. Somebody has recorded the audio call, and they can present it like you have said it. That would be a very big threat to you, but you know that you have not said it, and somebody can sample your voice. And if you're somebody very close to someone, like you in your friend circle, you can have a fight regarding when it comes to an AI deep fake voices. So there are second point is identity theft. Disclosing personal or financial data information can be really dangerous and is often used in identity fraud or scams. Just recently, I have told you, like when your father is calling and you're doing a job, you're earning much more, 1 to 2 lakhs a month, and your father is calling and he says that he needs 50,000. Will you be able to believe? Obviously, you will not. First of all, you will actually verify it that this call is from your father or this call is from your actual attacker. So that's where the frauds or scams happen when it comes to identity theft topic. They will become your personal, very close one, and they will ask for money. It's very urgent. I'm injured. I am there. I am in the hospital. My mother is in the hospital, and they will take all the money you have, and they will never return it. Obviously, there is no point in going in that. Third is legal scandals. So, deepfakes and manipulated videos could have severe legal implications, leading to the lawsuits and court penalties. So, we all know that if you're gonna put a case on an attacker which is undiscoverable, so that's gonna take time. That's gonna cost you a lot. You will be in financial losses. So you have to be sure. You have to be aware. You have to be updated. And yeah, that's the basic thing that you should do when it comes to voices and all. Just look at what are you sharing on your social media, the video, the photo, the audio, and what are your audiences. So go, definitely go for this. So let's talk about the strategies, how we can actually defend from it. We have talked about the two factor authentication.
We are actually having training programs using educations or simulations to improve the ability of users to detect or repel social engineering or phishing attacks. So secure your account, enable two-factor authentication to prevent an unauthorized access, and make your account private if it's available, and know your audiences, who are there, who are you fighting with, who are you on the best terms, and control your digital footprint. Limit yourself sharing personal information and images online. Regularly update software. Keep your devices and apps updated to safeguard against vulnerability. They can easily get into it. They can steal your information. They can steal your sensitive information. So yeah, in the conclusion, I will only say, uh, go for it. Go for everything. Explore your world. It's your age to explore everything, whatever you are seeing. But everyone is using ChatGPT. Even teachers are using ChatGPT to give homework to students. So I think you should use it. But let's say we should go for actual verifications. What is the website? Uh, The cyber awareness webinar is always about verifications. You're trusting everything, but you have to verify. As a human being, you have to verify. Like giving someone money when you are physically there. You want someone to be face to face. You want to share your money when they are face to face. You want to have a deal. And when it comes to us, when it comes to Indians, we are very specific and particular about our money. So be also there in the cyber world also. So that was the total cyber awareness webinar today. So thank you so much, and stay aware, stay awake, obviously, and share less information on it, and support someone who is a cyber bully victim. Thank you so much. Thank you so much, guys, for being here.